take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर रवि। और आज हम जा रहे हैं जामसावली, और जामसावली से घूमने के बाद हम जाएंगे घोगरा, जो कि वाटरफॉल है। पहले वीडियो में हम गए थे वो घोगरा महादेव था, और ये वाला घोगरा वाटरफॉल है जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा है। और नागपुर से आई थिंक 83-84 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लोग भी आ सकते हैं नागपुर से अगर कोई आना चाहे तो। और बाकी बढ़िया प्लेस है, देख सकते हैं आप। और अगर आप ये रास्ते से जाएंगे तो वेदर भी काफ़ी अच्छा है, सुबह का टाइम है और थोड़ी धूप हो चुकी है, तो आइए चलते हैं। तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप लोग भी आ सकते हैं। मंदिर अभी चालू है भी और नहीं भी, क्योंकि बाहर से दर्शन हो रहे, अंदर जाना अलाउ नहीं है और ज़्यादा भीड़ करने के लिए मना किया है। तो देख सकते हैं कोई नहीं है, वो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बाहर से दर्शन वगैरह कर रहे हैं, और बाकी सब तो बंद ही है, देख सकते हैं आप। इधर अभी नया कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे पूरा मंदिर का।
यही है घोघरा वाटरफॉल, जो कि अभी पानी के वजह से भरा हुआ है। तो पहले वो वहाँ से रास्ता था आने का, और ये यहाँ पे इतना पानी रहता है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर होते थे, और यहाँ से फिर हम लोग नीचे जाते थे। उस साइड वाटरफॉल काफ़ी अच्छा है, बट अभी पानी की वजह से हम लोग नीचे नहीं जा सकते। ये तो मैंने नीचे से भी दिखाया होता आपको। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, लेकिन अभी पानी की वजह से भरा है तो हम लोग नीचे नहीं जा सकते। तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। आ सकते अभी भी, कोई दिक्कत नहीं। अभी पानी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी उतना कम नहीं हुआ है। वो वहाँ से वाटरफॉल नीचे जाता है, देख सकते हैं काफ़ी। From this unlove, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not a bubble. Let me be myself. I'm not a bubble. Let me be myself. तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारा पानी है यहाँ पे, और कुछ लोग हैं जो उस साइड में फोटोज वगैरह ले रहे हैं। पता नहीं कहाँ से गए वो लोग, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्लेस है, आके घूम सकते हैं आप, बट अभी कुछ पानी थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे आना तो अलाउ नहीं है। लेकिन आप चाहे तो ये साइड में से रास्ता वहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि जहाँ से पहले आते थे वहाँ से पानी भरा हुआ है पूरा, तो साइड से आ सकते हैं और घूम सकते हैं। लेकिन इधर साइड से आएंगे तो लोगों ने काफ़ी गंदा करके रखा हुआ है। तो जो लोगों ने गंदा किया, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार ऐसा गंदा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग घूमने वाले आते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो गंदा मीन्स समझ सकते हैं, थोड़ा गाँव एरिया है तो गंदा कर रखा है, तो ऐसा करना नहीं। यहाँ पे सोचते होंगे पानी है गंदा कर देते, तो ऐसा करना नहीं, बिल्कुल गंदा। देख सकते काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। अगर आपको जाना है तो ये यहाँ से रास्ता है, नीचे से जा सकते हैं आप, और वहाँ से फिर वो जहाँ बंदे हैं वहाँ पे भी फ़ोटो निकाल सकते हैं। और सुबह या शाम को है, फिर से सजेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि बहुत धूप हो चुकी है। तो देख रहे होंगे कैसा लाइट आ रहा है पूरा। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। अगर अभी पानी कम रहता तो मैं नीचे जाके दिखाता वहाँ से, बट उसके नीचे भी एक और, यहाँ इसके बाद एक और वाटरफॉल है नीचे, बट हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि पानी ज़्यादा है, और उनके जैसा हम रिस्क भी नहीं ले सकते नीचे जाने का। हाँ, क्योंकि एक बार आप लोग को मालूम होगा शिवनी करके वहाँ पे पानी आया था, ऐसे कुछ लोग फ़ोटो ले रहे थे लड़कियाँ दो, तो वो लोग बीच में ही फंस गए और पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो फिर उनको 1-2 घंटे बाद निकाला था। तो ऐसा रिस्क हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। मैं भी फिर कभी आऊँगा मैं तो नीचे का व्यू दिखा दूँगा। अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें वीडियो कैसा बना है। कुछ सजेशन रहेगा तो दे सकते हैं आप लोग। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करना।